So I have started recording actually. So Okay. Okay, yeah, so let me just, the idea behind evaporator is very simple. You want to concentrate the streams. So this experiment will give you some, feeling as to what is happening. So if you have any problem, you have seen the video recording. If you have any problem, you can ask. The calculation, frankly speaking, I've gone through this is first time I'm taking this lab, I think, in my entire career. I was always involved with reaction engineering or process control. I saw the manual for the first time. And for this double effect evaporator, I saw the, handout. And I myself had many questions. So I requested at that time, Dr. Mohan to answer some of those queries. Maybe you also have some problems. So let me go ahead and ask you if you have any problems. Anyone? Can you please raise your hand and then ask if you have any problem? Hello, sir. Yeah, please. Who's speaking? Hemant. Hemant. Please, Hemant. Sir, what is the purpose of that calibration curve in that experiment? You see the density. I think you have to make a density versus concentration of calcium carbonate, isn't it? So because density is changing. Initially you have some density, then you are removing water from it, so it is becoming denser, right? You have to make a calibration curve. Once you have this calibration curve, then from the density itself you can find out the concentration. Okay. This is what I think it is. Okay. Anybody else? Experiment, you see, the problems that I had. Look at the diagram. The diagram, do you understand what is happening there? There are 3 heat exchangers shown there. Right? The first diagram itself. So, and the evaporator is shown separately. Actually, the evaporator and heat exchanger, they are a part of the evaporator. So heat exchanger number 1 and the evaporator number 1, they are part of the evaporator. And if you have to call any one of these as of the evaporator, the heat exchanger is the evaporator. That is where the evaporation is actually taking place. So the term heat exchanger there is wrong. That should be evaporator. That combined with the evaporator, where it is written evaporator, that is actually the separator. It separates the vapor and the liquid streams. Same thing is happening with the evaporator number 2 also. Are you with me on this? Do you agree with it or not? Yes, sir. Okay. So that is a problem. And by the way, feed stream is not shown there at all. Feed, where is the feed coming in? In that diagram, the feed coming in is also not shown. Then there are so many in the table form. So many temperatures have to be measured, right? Or recorded. I don't see the need of that, because finally what you have to find out is the economy. How much is the economy in the double effect evaporator, steam economy, right? And that you are making direct measurements for WV1, WV2, and how much steam is being consumed. These measurements you are already making there. So all those variables that are written there, T1, T2, T3, T4, I don't know where they are going to be helpful. If you were, if you were asked a question that do the energy balances, right, around the evaporator as well as evaporator number 1, evaporator number 2, then you would require these temperatures. The second problem that I had was in the evaporator number 2. What is the vacuum that has been applied? That is not mentioned anywhere. Or that recording, whether you have to record it or not,
That is also not given. So are you there with me? You are understanding my questions here? I'm Yes, asking sir. these questions because I myself am doing this lab for the first time. Okay. So are you with me on that? Yes, sir. So do you think that these temperatures are required? T1 to T6, I think in the table, if you see, so many temperatures have to be measured. Are they actually required? See, in the table that is given there, observation table, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, all these temperatures are required, recorded, but I don't see where they are going to be used. The questions that are asked are as follows: the steam economy and the evaporator capacity. That is the only thing that you have to find out. So maybe what I suggest is this. Some of you, at least if you want to get extra points in this lab, then you should do the energy balances also. Ensure that energy balances are being followed. Okay, then the temperatures T1, T2, T3, all these things would be required. Okay, are you there with me? Hello? Yes, sir. So can you do the energy balances? At least attempt. I don't know if all the data is given there or not for that to be possible. But Sir, we would please, need the latent heat data for water. all those things, that is the problem, you see, specific enthalpy also for how with the concentration, specific enthalpy is changing. That is also required. So I don't know, maybe, at least try it. Okay, this is what I would suggest. Try it and at least write down this in observation that maybe this kind of information is also required for this experiment. As far as the, whatever they have asked you, it's not very difficult at all to find out. The steam economy is very, very simple. Just take WV1, WV2, add them together, divide by WS1, and you get the answer, right? Similarly, the capacity is not a problem. So if you want to get extra points, can you please focus on this part and suggest, if energy balance is not possible right now with the data that is given, that this additional data should be given to you. Can you write it down, all of you? Hello? Otherwise, your answer will be in a couple of lines. That's it. So one of you can write down actually all these suggestions and later can circulate to all the students. I think that will be okay. No, I think nobody will take the initiative. So let all of them, they from on their own, please write down these suggestions. If you want to do the energy balance around evaporator 1 and evaporator 2, what are the additional data that is required? Can you do that? Somebody has to respond. Can you do that? Hello? Yes, sir. I'm looking at it. Okay, good. Prakash, do you have anything to add? Sorry, Narayan. Naren. Sorry, Naren. Nothing, sir. It's enough. You said good. हाँ, तो ये डायग्राम भी आप देखिए, ये डायग्राम जो दिया है ना, पहला डायग्राम, Yes, sir. ये गलत है. हीट एक्सचेंजर जो होता है वो उसके बाद एक छोटा सा एपरेटर होता है, सेपरेटर, दैट सेपरेट्स द हीटेड लिक्विड एंड द वेपर्स. लिक्विड अलग नीचे आ जाता है, वेपर्स ऊपर चले जाते हैं, राइट? So this whole thing, heat exchanger 1 and evaporator, you have shown evaporator as such a big quantity, apparatus. It is not. It is only a separator. Okay, heat exchanger is the main part. Steam एक ट्यूब्स में आती है और शेल साइड में फ्लो कर रहा है तुम्हारा ये कॉन्सेंट्रेट फीड की ट्यूब में फीड फॉलो कर रही है. कहाँ फीड जाती है नरेन? Yes, sir. So basically, sir, feed.
हाँ, ये तुम्हारा शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है ना। तो स्टीम कहाँ पर फ्लो कर रही है? पहला हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा हूँ सर। हीट एक्सचेंजर सर सेल साइड में, सर सेल साइड में स्टीम है। ओके, तो ट्यूब में तुम्हारा जो आ रहा है वो तुम्हारा फीड आ रही है, राइट? Yes, अच्छा, इस डायग्राम में फीड कहाँ एंटर हो रही है ये भी तुमको ऐड करना होगा। सर फीड हमारा नहीं दिखाइए यार, उसमें करेक्ट करना है ये बाद सर। में। एक बार आप डायग्राम देखें सर, उसमें फीड इन लिखा हुआ है सर, वो आप कहाँ लिखा है? फीड इन कहाँ पर है? मैंने देखा है डायग्राम से फिगर 2 आप देखें तो फिगर 2 में आपको मिल जाएगा। नहीं, फीड इन कहीं नहीं है इसमें जो सर ये हमारा लैब मैनुअल, सर लैब मैनुअल आपके पास मिला है क्या? नहीं, मेरे को जो राइट अप मिला है उसमें नहीं है ये। ओके सर नहीं है सर, हमारे में भी नहीं है। ओके सर, मैं शेयर कर दूं क्या सर? शेयर अभी नहीं, कोई नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। फाइनली जो आंसर निकालने हैं, जो कहा गया है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी बच्चे को। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग इज डू दिस फॉर द फ्यूचर। ओके, और ये हीट एक्सचेंजर 1 और फर्स्ट इवेपोरेटर जो डायग्राम बनाया है, दिस होल असेंबली इज एक्चुअली इवेपोरेटर। ओके, हीट एक्सचेंजर जो है इवेपोरेटर का पार्ट होता है यार। यस सर। हाँ, तो ये डायग्राम गलत बना है। इसी तरह से हीट एक्सचेंजर 2 और सेकंड इवेपोरेटर, दे आर दिस इज वन पीस ऑफ इक्विपमेंट एक्चुअली। इवेपोरेटर 2 नॉर्मली क्या होता है, हीट एक्सचेंजर के बाद एक छोटा सा सेपरेटर लगा होता है जहां वेपर और लिक्विड को अलग अलग किया जाता है। तो तुमने इतना बड़ा जो डायग्राम दिखाया है, इतने बड़े दिखाने की जरूरत नहीं। सेपरेटर इतना बड़ा नहीं होता है, हीट एक्सचेंजर से भी बड़ा हो। और इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली में। जो हीटेड आपका सॉल्यूशन आ रहा है और वेपर आ रही है, उनको बस वो लिक्विड नीचे आ जाता है, वेपर ऊपर चली जाती है। दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट इतने बड़े इक्विपमेंट में यही हो रहा है जो आपने दिखाया है। ठीक है ना नरेंद्र? हाँ, तो ये डायग्राम जरा ठीक से बनाओ। ओके। हाँ, ठीक है। और इसी तरह से ये इतने सारे जो तुमने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, इनमें जरा अपने जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं या जिन्होंने ये मैनुअल बनाया है, उनसे बैठ के पूछें ये क्यों जरूरत है। T1 T2 T3 T4 ये सब मेजर तो कर रहे हो, लेकिन इससे निकलेगा क्या? आपका जो चाहिए है VB1 चाहिए, VB2 चाहिए, तो कंडेंस जितनी हो रही है स्टीम, उससे पता चल जाएगा, राइट? एफएस कितना है, स्टीम कितना यूज कर रहे हैं, वो भी तुमको कंडेंसर से पता चल जाएगा। तो स्टीम इकोनॉमी आ गई, इसी तरह से इवेपोरेटर आ गया। ऑल अदर थिंग्स आर अननेसेसरी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि, क्योंकि मैं तो पहले लिया नहीं हूँ, आई हैव नॉट सीन दिस। तो मुझे तो लगता है कि ये सब जरूरत नहीं है। पूछिए उनसे, कोर्स कोऑर्डिनेटर जिन्होंने भी बनाया है एक्सपेरिमेंट, या इसमें चीजें और ऐड की जाए कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। ठीक है नरेन, ये बात करोगे? श्योर बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ओके। So anybody else has any problem? I think Hello, that, sir. हाँ बताइए। How do we decide if we want to use forward feed or backward feed? फॉरवर्ड फीड और बैकवर्ड फीड, मुझे तो तुम्हारे टर्म से नहीं समझ में आ रहा है। फॉरवर्ड फीड कहाँ पर है यहाँ? बैकवर्ड फीड कहाँ है? इसमें नहीं है, मतलब डबल हीट डबल इफेक्ट इवेपोरेटर में हाउ डू वी डिसाइड? डबल इफेक्ट इवेपोरेटर कई तरह के होते हैं। इवेपोरेटर फॉलिंग फिल्म होता है, राइजिंग फिल्म होता है। ये आपका इवेपोरेटर पे इक्विपमेंट में जाओगे तो आपको पूरा इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएगा, विकी उसमें ही चले जाओ यार। तो उसमें ये देखो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ओके, तरह तरह के कौन सा इवेपोरेटर किसकी डिजाइन बेटर होती है, ये तो आपको रिसर्च का वो टॉपिक है। ओके, यहाँ आइडिया बड़ा सिंपल सा है। आपके पास एक डाइल्यूट स्ट्रीम है, उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसको अब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सिंपल है कि इसको सॉल्वेंट को इवेपोरेट करा दो, राइट? दैट इज द आइडिया ऑफ इवेपोरेटर। और जो क्योंकि इसमें से सॉल्वेंट निकल जाएगा तो स्ट्रीम जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, ठीक है ना? तो अब इसको और इफेक्टिव कैसे बनाएं? उसमें डबल इफेक्ट। तो उसका आइडिया ये है कि फर्स्ट इवेपोरेटर का जो वेपर आ रहा है उसको यूज करो इन द सेकेंड इवेपोरेटर, राइट? दैट इज द आइडिया। इसको कर सकते हो बाय क्रिएटिंग ए लिटिल बिट ऑफ अ वैक्यूम एज कंपेयर टू द फर्स्ट इवेपोरेटर। सिमिलरली द थर्ड इवेपोरेटर, उसमें थोड़ा और वैक्यूम करो। सो दिस इज बेसिक आइडिया। नाउ इसके बाद इवेपोरेटर की डिजाइन इटसेल्फ, इफ यू सी,
then you may find that there are wide variety of evaporators available in the industry. Okay, इस पर पूरी आपको रिसर्च करनी होगी, और मैं इसमें frankly speaking I am not an expert in this. Okay, anybody else? तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो दिखाया है, जो भी डेटा दिया हुआ है. ऑफ कोर्स आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट डेटा इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. जो आपको डेटा दिया हुआ है उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट में. वो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. नाम है बताइए. तो ठीक है, आप जो मैंने सजेशन दिए हैं वो भी आप करिए, ठीक है ना. और इवेपोरेटर के बारे में जो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो वैलिड क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड और ये प्लेट राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स, ये क्या होते हैं? ओके, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? राइट, यहाँ तो हमने केवल शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर लिया है, ठीक है ना. ये सिंपल सा इवेपोरेटर हमने यहाँ पर लिया है. तो और वैरायटी क्या होती है इसको भी आप पढ़ के अगर आप लिखोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे. लेट मी टेल यू दिस. ओके, एटलीस्ट if you can tell me how many different varieties of evaporators are there, you'll have to do some literature survey. Maybe write a para or 2 paras on this. Can you do that? Hello everyone. Yes, sir. हाँ, तो ये चीज करके, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट में कुछ करने को है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे साइड से. आंसर आपका 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना. चलिए, अगर आपका किसी का और का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. डॉक्टर मोहन, आई थिंक दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो कैन यू आस्क देम टू डू दिस व्हाटएवर आई हैव आस्क्ड. वैरायटी ऑफ इवेपोरेटर, इस पे थोड़ा सा लिखें इंट्रोडक्शन में, थोड़ा सा. I think they should add actually all these suggestions in the report, as this is the final report, and we expect इसमें आपको actually ज्यादा पॉइंट मिलेंगे. इसमें आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, ये भी बता दो. So you guys can actually just whatever suggestion Professor Gupta has given, just add in the report. And if you have any question, you can just write to me. And CC Narenji, and just write to me. I will just look into that. Right? We always do that thing. That if something is missing, that's fine. And I hope actually you guys might have gone through the video. So if you have not gone through, please go through again. Try to understand. Even though it looks like it's a means just calculation, but it's more about the system. Right? Anyway, you have gone through all those courses and you have done great. But still, when means you see some system, right? First thing is whether you know that system or not, whether it's evaporator or not, right? What is the basic actually fundamental behind how it is working and other things, those things. And those are the things when you will go to the industry, right? You are not going to deal with the books and other things. Most of you will deal with actually these kind of machinery, right? These kind of equipment. Just try to get a flavor. Do little bit literature survey, as Professor Gupta has suggested. Add your actually points that what do you think, and if you find actually something is not right, please actually mark in the report. So later we can correct actually that thing, right? So these are the points. Yeah. Anyone else? Otherwise, we will be closing this session. Anybody has any question? Okay, Dr. Mohan, I think they have also understood what has to be done. So thanks, Professor Gupta. Okay. And yeah, thanks, Narenji, and thank you all. This was the, I think, last session of this semester. So if you have any doubt or anything, just please write to me. Any kind of doubts or anything, I will try to address that thing. So what about quiz and presentation schedule? Yeah, so that I will announce later. Okay. Will we have like next week?
presentation? So that I have to decide actually. When it will be decided, I will just announce on Moodle. So you can just actually what kind of quiz it will be and what will be the syllabus and other thing. I will just give you a detail about that thing. Right? But one thing is for sure, actually, the quiz will be on Moodle and objective type. Right? I think that will help you. And any further detail, I will surely announce that. Any other question? Okay, so Okay, so good luck. if Good luck. there is no doubt and no question, thanks all of you. Oh, thanks, Professor Gupta. Okay, bye.